Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज session start करते हैं. And in today's session, we are going to solve the past paper questions of Karnav maths. K-maps के questions हम लोग solve करेंगे. We are going to see the rules of K-map. We are going to see almost all the previous past paper questions of K-map one by one. So starting with the latest one. सबसे पहले बच्चों मैं आप लोग करवा रहा हूँ 9618 अक्टूबर नवंबर 2021. सो दैट इज द मैक्सिमम सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था हमारे पास. नो ज्यादा मार्क्स हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो you need to write the Boolean expression that correspond to the given truth table as a sum of products. So we need to write the Boolean expression. बच्चों sum of the product form लिखनी है आप लोगों ने. So आप लोग को पता है sum of the product form के अंदर आप लोग आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं. आउटपुट में जहां जहां 1 है सिर्फ वो वैल्यूज आप लोग यहाँ पे लिखेंगे. लाइक यू कैन सी वी हैव 1 ओवर हियर. सो दिस वाज A, this was B, C and D. So if the value of the variable is 1, तो आप उसकी वैल्यू सिंपल लिखेंगे डॉट. बट यू कैन सी द वैल्यू ऑफ B is 0. तो आप B लिखेंगे तो लेकिन उसके ऊपर एक बार लगा देंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ B is 0. सिमिलरली डॉट C, C की वैल्यू भी 0 थी और D की वैल्यू 1 है तो आई एम गोइंग टू राइट सिंपल D. So this is the Boolean expression for this value. Now the next one plus, you can see 1 over here. So A1, C1 and D1. Only B is 0. So A1 dot B bar dot C dot D. Similarly, now you can see we are having 1 over here. So A1, B1, C0, D0. So plus A1 dot B1 dot C bar dot D bar. Similarly, plus you can see 1 over here. Only C is 0. The remaining variables are 1. So A1 B1 dot C bar dot D. And the second last, only D is 1. All the variables are 0, 1 except D. So A1 B1 C1 D bar. We put a bar on D because D की value क्या थी? 0 थी. And the last one बच्चों all ones. So plus A1 dot B1 dot C dot D. So this is called sum of the product form. Moving forward. अब वो बोले बच्चों इस इन values को we have to place in K-map. So you can see ये जो पहली वैल्यू आप लोग को रिप्रेजेंट हो रही है like this one, these values are for A. जो second values है आपके पास, these values are for B. Similarly अगर आप यहाँ पे देखें so C की values are these. ये C की values है and these are the values for D. ये D की values है. So what was the equation? हमारी equation क्या थी भाई? ये equation मैं copy कर लूं जरा because we need to जो 1 होता है सिर्फ हम उसको place करते हैं. So the first one is A1, B0, C0 and D1. So I need to find this. मुझे यहाँ टेबल में find करना होगा A1, B0, A1, B0 and C0, D1. Here you go. So you can see we have the value of A as 1. This is the value for A. The value for B is 0. Now the value of C is 0 and the value of D is 1. Similarly, this is the first line. Let's see the next one. In this,
We only have B as 0. Baki, all the entities are 1. So A1, here you go. So A1, B0, C1, and D is also 1. Now, the next one, only C is 0. Here you go. Now the next one, I missed. मैंने कोई इक्वेशन मिस कर दिया भाई यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन मिस कर दी, सॉरी, डी बार. नाउ A1 B1 C bar D bar. Now this one only D is 0, and the last one all ones. So we are done with all turn-off map. The remaining values are set to 0. Now we need to make बच्चों groups. Groups के there are multiple rules जो मैंने आप लोगों को क्लास में लिखवाए थे. Like it's a 3D model. We always go. We can always make group in the power of 2. We cannot make diagonal groups. We always go with the largest group first, and it's a 3D model. So if I see, so I can go with this group. एक ग्रुप तो मेरा ये हो जाएगा बच्चों, and the next group will be sharing group. If मेरे पास sharing group की availability है तो first we are going with the sharing group first, and then हम कोई और अगला ग्रुप देखेंगे. अब वो बोले बच्चों इस ग्रुपिंग की सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख के दिखाओ. सो लेट्स सी द पिंक वन फर्स्ट. तो मैंने आप लोगों को बच्चों एक लाइफ का रूल बताया था बड़ा सिंपल सा, कि जो इंसान, जो दोस्त आपका अपना बिहेवियर चेंज करे एज द टाइम पासेस, तो आप उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें. तो सेम मैकेनिज्म इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर. जो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करे उसको क्या करो भाई, उसको यहां से चार्ट से निकाल दो. सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट. ए की वैल्यू पिंक वाले के अंदर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1. सो ए इज ऑल गुड. लेट्स सी द वैल्यू ऑफ बी. बी यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1. सो बी भी चेंज नहीं हुआ. लेट्स सी द वैल्यू ऑफ सी. यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1. सो द वैल्यू ऑफ सी इज बीइंग चेंज. सेम फॉर डी. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1. सो जो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करता है हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं. देखिए रमल बेटा, बड़ा मैं अगेन वापस से एक्सप्लेन करता हूं, कोई इश्यू नहीं है, वी हैव टाइम. मैं अभी पिंक वाला ग्रुप देख रहा हूं. आई एम लुकिंग एट द ग्रुप. आई एम लुकिंग एट दिस ग्रुप. ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं एक ग्रुप के अंदर अगर कोई वेरिएबल लाइक ABCD अपनी वैल्यू को चेंज करे तो हम उसे निकाल देते हैं. लाइक ए की वैल्यू अब देखें यहां पे क्या है, ये 1 है. ए की वैल्यू यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, और यहां पे भी 1 है. सो हर दफा ए की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज बीइंग 1. सो वैल्यू चेंज नहीं हुई. ए को मैं नहीं निकालूंगा, मैंने ए सिंपली लिख दिया यहाँ पे डॉट. मैंने बी को ऑब्जर्व करा, बी यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ, तो बी भी चेंज नहीं हुआ, तो मैंने बी भी रख लिया. अब मैंने सी को ऑब्जर्व करा. इस ग्रुप में सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 0 है. मतलब यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, लेकिन यू कैन सी द वैल्यू ऑफ सी इज 1. इस ग्रुप में यहाँ पे वैल्यू 0 0 थी, यहाँ पे सी की वैल्यू चेंज हो गई, 1 हो गई.
So we are going to remove C. Similarly, अब मैंने D चेक करा, ये D है ना, ये D है, तो D यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, D चेंज हो गया, जो वेरिएबल चेंज हो उसको क्या करो, रिमूव कर दो। तो C और D मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सो आई एम डन। ओनली इस ग्रुप में हम लोग क्या लिखेंगे, वी आर ओनली गोइंग टू राइट A डॉट B प्लस अगला ग्रुप, दैट इज द ब्लू वन। A की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, A की वैल्यू यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो A की वैल्यू चेंज नहीं हुई, so I am going to keep A plus A. Now let's see the value of B. The value of B over here is 1. सर तो A और B को ऊपर वाली लाइन चेक करके जैसे C और D को भी चेक फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के अंदर चेक करते हैं। अब देखिए ये ग्रुप है आपका, तो ग्रुप के अंदर वैल्यूज चेक करेंगे आप वेरिएबल की। अब देखिए यहाँ पे ये ग्रुप था, तो मैंने सिर्फ ये चेक करा, और यहाँ पे ये चेक करना पड़ा मुझे बिकॉज ग्रुप की वैल्यूज है। अब यहाँ पे ये ग्रुप है, तो मैं ये चेक करूंगा और ये चेक करूंगा, सो वी ओनली चेक फॉर द ग्रुप। अब लेट्स सी द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू यहाँ पे ग्रुप में देखिए, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई 0। थ्रू आउट द ग्रुप सेम रहनी चाहिए, तो यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज हुई, मैंने बी को क्या करा, रिमूव कर दिया। नाउ लेट्स सी द वैल्यू ऑफ सी। 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो गई, सी को भी रिमूव कर दिया। सॉरी। नाउ लेट्स सी द वैल्यू ऑफ डी। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो डी की वैल्यू चेंज हुई, आई एम गोइंग टू कीप डी, सो इट विल बी डॉट डी, एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्वेशन। नाउ वो बोल रहे बच्चों सिंप्लीफाई द अबव बूलियन एक्सप्रेशन, सो व्हाट वी कैन डू, there is nothing much to simplify in the above equation, you just need to take common, a common ले लिया, b plus d, and I don't think any Boolean algebra laws are being applied over here to solve this further, this equation further. So we are done with this question. अच्छा सवाल था, I hope आप लोगों को अब चीजें क्या हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। Let's move towards the next question. Okay, now we need to write the equation for x. So x कहाँ कहाँ 1 है सर, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, so four expressions for x, starting with the first one, a0, 0 का मतलब बार आ जाएगा, डॉट b0 बार डॉट c प्लस a0 a बार डॉट b प्लस c बार। Next, a1 all zeros, a1 dot b bar dot c bar. Next, all ones plus a1 dot b dot c. Similarly, we need to write the equation for y. Y कहाँ कहाँ 1 है भाई, यहाँ 1 है, यहाँ। So let's see. a0 means bar dot b dot c. Then you can see only b is 0, so plus a dot b bar dot c. Then you can see a1 b1 and c0, so plus a1 dot b dot c bar, and the last one is all ones, so plus a dot b dot c. Okay, we have a question before we move forward. So second में प्लस की जगह मल्टीप्लाई नहीं आएगा फॉर x. हाँ सॉरी, थैंक यू वासिक फॉर द करेक्शन। जल्दी जल्दी में मैंने गलती से प्लस लगा दिया था भाई, मल्टीप्लाई होता है सारा। So this is called sum of the product form. Moving forward, अब वो बोले बच्चों
x का आउटपुट प्लेस कर दो, y का दोनों का प्लेस कर दो. So we can do that. अब मैं जल्दी जल्दी प्लेस कर रहा हूं, आप लोग खुद देख लेगा. A0, B0, C1. Only B is 1, C0, D. Then A1 और बाकी दोनों 0. Then A, B, C. The remaining bits will be set to 0. For Y, we have A bar dot B dot C. Then we have only B के ऊपर बार है, so A1. Then C के ऊपर बार है सिर्फ. Then ABC. Okay जी, so we place the elements, right? हमने elements place कर दिया. वो बोल रहा है, can you simplify the expression in part A? Draw the loops around the groups. Draw loops around the appropriate groups of ones to produce an optimal sum of the product for a single output. That table can be simplified in part B. So बच्चों यहाँ तो कोई ग्रुपिंग नहीं बन रही है आप लोग के पास. These groups will be solo groups. ये सारे solo group होंगे because कोई भी ग्रुप यहाँ पे नहीं बन रहा हमारे पास. But you can see यहाँ पे हमारे पास ग्रुपिंग हो रही है. So starting with the first, मैंने ये 2 का ग्रुप बना दिया. Then we can go with the sharing group. This can be one of the sharing groups that we have, and we can have another sharing group like this. So we will be having 3 groups. अब वो बोल रहे बच्चों simplified form लिखो इसकी. So पहले black वाला ग्रुप देख लेते हैं, the above the vertical one like this one. तो यहाँ पे A और B constant है, C change हो रहा है. So A dot B plus, now let's see the pink one. In the pink group A change हो रहा है. You can see A की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई. A is being changed, so we are going to remove A. A remove कर दिया. B और C की वैल्यू क्या है 1 है. So B dot C. And the last, this group, the sharing one, यहाँ पे A change नहीं हो रहा. You can see A आपके पास यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और C भी change नहीं हो रहा, लेकिन B change हो रहा है. So it will be plus A dot C. So examiner is awarding us बच्चों 3, 3, 3. पता नहीं कितने मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं, खुद ही कैलकुलेट कर लेगा. So this was one of the questions that we performed. Okay, we have a question, sir. How many ones there can be in a group? हसन, आपका सवाल नहीं समझा मैं. ग्रुप के अंदर कितने, मतलब मैक्सिमम वंस आप पूछना चाह रहे हैं कि कितने एक ग्रुप में मैक्सिमम हो सकते हैं? हाँ, तो मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है आपके पास. लाइक इट विल बी ऑलवेज, ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ वंस होंगे इट विल बी ऑलवेज इन द पावर ऑफ 2. मतलब 2 की पावर 0 इट कैन कंटेन 1, 2 की पावर 2 इट कैन कंटेन 4, sorry 2 की पावर 1 it can contain 2,
2 की पावर 2 it can contain 4, it can contain 8, it can contain 16, it can contain 32. लेकिन आपके सिलेबस के अंदर इतना बड़ा पैटर्न आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. द मैक्सिमम नंबर्स आर 16. 16 से बड़ा ग्रुप आपके पास नहीं बन सकता. Now moving forward. Yes, बिल्कुल. I don't know. iPhone आपने अपना नाम रखा हुआ है. So nice way to flex. अच्छा जी, moving forward. ये तो ऑलरेडी रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी. लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन बच्चों. एक और क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं यहाँ पे. अब मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? बिकॉज यू पीपल नाउ नो द स्टफ. कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो मुझे रोक दे. I will repeat that stuff. We have 1. Again, we need to write the sum of the product form. So A bar dot B bar dot C bar plus A bar dot B bar dot C plus A bar dot B dot C bar plus A bar dot B dot C plus A dot B bar dot C bar plus A dot B bar dot C. और तो कोई वन नहीं है. नो, वी आर डन. सो वी आर डन फर्स्ट पार्ट. अब इधर इसको के मैप में प्लेस करना है. सो ऑल जीरोस. oops, sorry. A0, B0, C1. Then we have only B as 1. Now only we have A as 0. Baki are ones. Then we have A1 and all zeros. A1 all zeros. Then we have only B0 and all ones. So this is how. And the remaining bits are set to 0. So बच्चों this is how we place the elements. अब एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोगों से कि ग्रुपिंग करो जरा यहाँ पे. So the maximum group, we always go with the maximum group first. तो सबसे बड़ा ग्रुप will be the 4. तो ये 4 का ग्रुप बना दिया बच्चों मैंने. I created the group of 4. Now I told you people कि ये एक 3D मॉडल है. सर मतलब ये बैकएंड के ऊपर अटैच्ड है एक दूसरे के साथ. So we are not going with the group of 2. We are going with the group of 4 like this. ये 2 यहां पर हुए. ये 2 एलिमेंट्स बच्चों इसने यहां से ग्रैब करे और 2 इसने शेयरिंग कर लिए. इट्स अ 3D मॉडल. बैकएंड के ऊपर ये अटैच्ड है एक दूसरे के साथ. So we need to know this. So यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 3D मॉडल वाला रूल भी अप्लाई किया गया. Yes, of course, दूसरा भी 4 का बनेगा. रमन ने भी बताया हमें. So this is how बच्चों. अब इसका सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म लिख लो भाई. पहले पिंक वाला देख ले भाई. A0 चेंज नहीं हुआ. तो मैंने A की वैल्यू लिख दी, लेकिन I put a bar on A because the value was 0. Yes, in paper you are only going to use one pen. In paper, in examination, आप एक ही पेन से of course आप लोग ग्रुप बनाएंगे. वहां पे आपका कलरिंग का ऑप्शन नहीं है. And your papers are going to be scanned. So just make group using single color.
डार्क वन ब्लैक। अगर मैं पेपर करता तो मैं ब्लैक से करता, मैं ब्लू से पेपर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि ब्लैक कलर जब आप स्कैन करते हैं तो काफी अच्छा स्कैन हो जाता है। तो अगर आप लोग मतलब मैं अगर सीआईसी का केमिस्ट्री एग्जाम देता तो मैं ब्लैक पेन यूज करता, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स सी द वैल्यू ऑफ बी। 0 1 चेंज हो गई, निकाल दिया। लेट्स सी द वैल्यू ऑफ सी। 0 1 चेंज हो गई, निकाल दिया, डन। प्लस लेट्स सी द ब्लू ग्रुप नाउ। A1, यहाँ पे देखो A1 है पूरा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, A0, तो A को हमने रिमूव कर दिया। लेट्स ऑब्जर्व बी। बी यहाँ पे 0, बी यहाँ पे भी 0, सो बी हमने रखा, लेकिन 0 है तो बी बार डॉट। सी को ऑब्जर्व करा मैंने यहाँ पे, सी यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 चेंज हो गया, रिमूव कर दिया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ए बार प्लस बी बार। अच्छा जी, डी मॉर्गन्स लॉ आ गई भाई। जरा बूलियन अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आ गया। आई वुड रियली लाइक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। कर दे जरा जल्दी से सॉल्व। अच्छा जी, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई की जा रही है। सो यू पीपल नो डी मॉर्गन्स लॉ हमें एक्सप्लेन करती है, मैं यहाँ लिख दूं, ए डॉट बी मैं डी मॉर्गन्स लॉ भूल गया भाई, देख ले जरा एक दफा। हियर यू गो। तो डी मॉर्गन्स लॉ एक्सप्लेन करती है ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो आई थिंक यही डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई की जा रही है भाई। मल्टीप्लाई हो रहे दोनों, हम इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी, ठीक है। सो डी मॉर्गन्स लॉ में एक्सप्लेन करती है ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो मैंने यही डी मॉर्गन लॉ बच्चों अप्लाई करी यहाँ पे। डब्ल्यू बार तो ऑलरेडी बार था, प्लस एक्स बार प्लस वाई होल बार, ठीक है। नाउ आई अगेन अप्लाई। अब यहाँ पे भी डी मॉर्गन लॉ अप्लाई की जा रही है। अभी अभी देखो, अभी डबल बार अभी नहीं है, डबल बार अभी आएगा, अब यूज होगा। यहाँ पे अब लेट्स कंसीडर, ये एक एलिमेंट है भाई आपका, ये एक और एलिमेंट है, और कौन सी डी मॉर्गन लॉ अप्लाई की जा रही है, प्लस वाली। तो मल्टीप्लाई में चेंज होते हैं भाई ये, सर बिल्कुल होते हैं। सो डब्ल्यू बार, इसके ऊपर एक और बार आ जाएगा, डॉट एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, सॉरी मल्टीप्लाई में चेंज होने, मल्टी प्लस है ये, डॉट जेड बार, और बार इसके ऊपर आ गया। बार टू बार बच्चों कैंसिल हो जाता है आपके पास। सो नाउ दिस विल बिकम w डॉट एक्स बार प्लस y बार डॉट z, एंड आई थिंक दैट्स इट। कितने नंबर का सवाल था, 3 मार्क्स, वी आर डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई वाला डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर इसको ब्रेक करके प्लस वाला डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया, और फिर हम लोगों ने बार टू बार यहाँ पे कैंसिल करा। So this was one of the question that we performed. ऐसे ही आ गया था, मैंने सॉल्व करवा दिया। ओके जी, मई जून 2000
मई जून 2019 का क्वेश्चन है बच्चों एक और। आई विल बी सॉल्विंग दिस। ये सवाल भी जरा मैं करवाता हूं। ओके वी हैव अ क्वेश्चन सर, रिपीट दिस अगेन। देखो पहले मैंने यहाँ पे ये रूल अप्लाई करा। द रूल वॉज, मैंने इसको कंसीडर करा, इस पूरे को कंसीडर करा ए, इस पूरे को कंसीडर करा मैंने बी। तो बूलियन लॉ क्या बताती है आपको? यही बताती है ना भाई, ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो समझो मैंने यहां पे लिख दिया ए बार प्लस बी बार। अब मैंने ए की फुल फॉर्म लिख दी, तो ए क्या था? डब्ल्यू बार प्लस एक्स, और बी क्या था? वाई प्लस जेड बार, और इनके ऊपर एक और बार लग गई। अब जब ये मैंने ब्रेक करके इनको लिखा, तो यहां पे भी एक और रूल आ गया मेरे पास। अब मैंने प्लस वाली डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करी। प्लस वाली डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, हमें एक्सप्लेन करती है, ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो आई कंसीडर दिस, मैंने डब्ल्यू बार को कंसीडर करा एज ए, और मैंने एक्स को कंसीडर करा एज बी। सो यू कैन सी डब्ल्यू बार, बार डबल बार आ गई बिकॉज पहले से ऑलरेडी बार अवेलेबल थी, डॉट एक्स बार। और यहां पे क्या हुआ, वाई डॉट जेड के ऊपर पहले से बार थी, जेड डबल बार। तो जब डबल बार आती है तो बार टू बार क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। तो ये बार टू बार आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई, बार टू बार कैंसिल हो गई। तो वी हैव डब्ल्यू डॉट एक्स बार प्लस वाई बार डॉट जेड। ठीक है, सो बेटा यू नीड टू रिमेंबर द लॉज। ये लॉज बिल्कुल रटी भी होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स में बता सकता हूं मैं। ये सारी लॉज याद होनी चाहिए पेपर के लिए। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन दैट वी हैव। वी नीड टू रिमेंबर ऑल द लॉज ऑन फिंगर टिप्स होनी चाहिए। आप ये अगर सोचें कि पेपर में ऑन स्पॉट बना लेंगे लॉ, बिकॉज वी नो द ट्रिक्स, सर्टेन ट्रुथ टेबल बना के हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पेपर में हम डायरेक्टली बना लेंगे और सिचुएशन को देखते हुए, दैट्स रॉन्ग। बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, 1 hour 30 minutes। टाइम को मैनेज करना पेपर 3 में इज अ की, इट्स अ की फैक्टर। सो you need to observe, you need to take count the timing। so ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। सो बच्चों ये सवाल भी जरा मैं आप आखिरी करवा देता हूं, और ये जो ये वाला लास्ट वाला, ये फिर आप लोग खुद कर लेगा। ठीक है, सो अगेन आई वोंट बी वेस्टिंग मच टाइम, मैं थोड़ा स्पीड में सॉल्व करूंगा ये सवाल, बिकॉज अगेन इट्स एन इजी वन। यस, वर्किंग शो करनी होती है वासिक। A0 B0 C1 C1, only B is 1 B1, then we have only A0 B1 C1 A0 B1 C1, then we have only, सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, पता नहीं, इट वाज ऑलमोस्ट सेम, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। खैर चलें कर लेते हैं। So over here we have B0, so grouping वही सेम होगी, ये सेम ही क्वेश्चन है। Some of the product we have already done. Okay, now let's see, ये आ गया बड़ा। तो बच्चों आपको यहाँ पे सीक्वेंस लिखने के लिए बोला एग्जामिनर ने, तो सीक्वेंस हमेशा सेम रहती है, 00 01 11 10, and we call this code as gray code। Similarly 00 01
1 1 1 0. Now let's place the values. ओके जी, सिर्फ C1, बाकी सारे 0. C1 नहीं, ये तो D1 हो गया. C1 all 0. Here you go. C1, A, B, C, D all are zeros. Now let's see the next one. C and D are 1. Here you go. Then we have B and C1. B and C are 1. B1 and C1. B1 and C1. I think no. I think this is the one. B1, C1, A0, D0. Then we have all ones except A. Then we have A1 all zeros. Then we have A1 and D1. Then we have A1 and B1. Then we have A1, B1, only C is 0. And we are done. So 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So over here, बच्चों groups बनाने आप लोगों ने. So I can see 2 groups. The first group will be, of course, ये 4 का group बन जाएगा. And another group will be this 4. ये 4 का group बन जाएगा. So we have 2 groups. हमने grouping बना लिया. अब simplified form लिखने पहले blue group देख रहा हूँ. A0, A0. So A remains same, A bar. B. So B0, B1 चेंज हो गया. B को क्या किया? रिमूव कर दिया. C देखो 1 1. C सही है. So dot C. D देखा मैंने यहाँ पे. D जो है यहाँ 1 था, यहाँ पे 0 हो गया, चेंज हो गया, D को रिमूव कर दिया. So A bar dot C plus. Now let's see the pink group. A1, A1, A यहाँ पे भी 1 है, A यहाँ पे भी 1 है. So A सिंपली लिख दिया मैंने A. Dot. Let's see B. B यहाँ पे 0 है, B यहाँ पे 1 है, B यहाँ पे 0 हो गया. B चेंज हुआ, रिमूव कर दो. Let's see C. C यहाँ 0 है, C यहाँ पे भी 0 है. So C 0 है, तो C के ऊपर बार लगा के मैंने इसको सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म में इंक्लूड कर दिया. एंड नाउ लेट्स सी D. तो D बच्चों यहाँ पे 0 है और यहाँ पे D क्या हो गया? आपका 1 हो गया, चेंज हो गया, तो D को रिमूव कर दिया. So this is the final sum of the product form. 8 4 4 8 8 and पता नहीं कितने marks, whatever, 8 and 5 15 marks. So this was one of the question बच्चों of K-map that we did. And मैंने यहाँ पे multiple K-map के आप लोगों को questions करवाए. I hope आप लोगों के सारे questions clear हुए होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा. अगली सेशन के अंदर, अगली क्लास के अंदर we are going to take another topic. और I have observed कि बच्चों को assembly language के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. So next session के अंदर मे बी पॉसिबल, शायद मैं आज तक के जितने भी assembly language के क्वेश्चन हैं वो सारे क्लास के अंदर आप लोगों को one by one with detailed explanation आप लोगों को सॉल्व करवा दूं. तो आज ये तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. नहीं, आज रात नहीं है अली बेटा क्लास, आज अभी हम लोग नहीं लेंगे. ठीक है, चलें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर एंड स्टे सेफ.